गुरु वो दीप हैं जो अंधेरों में राह दिखाते हैं। गुरु वो सागर हैं जो जीवन की गहराई सिखाते हैं। उनकी डांट में भी छुपा आशीर्वाद झलकता है। उनकी मुस्कान से हर दिल महकता है। On this exuberant morning, as the fragrance of devotion fills the air, we gather in this august congregation to admire the very architects of our intellect, our revered teachers. You are not merely disseminators of knowledge, but caretakers of wisdom. With folded hands, we extend our profound respect to Honorable Dr. Sister M. Rashmi AC, Principal, Patna Women's College, respected Dr. Sister M. Tanisha AC, Vice Principal, Patna Women's College, respected Dr. Sister Jinsi AC, Superior, Avila Convent, deans, teaching and non-teaching staffs, students, and one and all present in the arena. Respected mentors, today is not merely a celebration. It is a pilgrimage of gratitude from the dust of your feet to the infinity of Google Meet. इस विशेष दिन पर हम आप सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। आपकी शिक्षा, आपकी प्रेरणा और आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। Dear mentors, this isn't just a celebration. This is our very own Kabhi Khushi, Kabhi Gratitude. Venerable teachers, Happy Teachers' Day. Indeed, on this sanctified morning of worship, destiny accords us the rare privilege to navigate this voyage of gratitude. मैं हूँ राजश्री, शब्दों को सुरों की तरह पिरोने का प्रयास करती हुई, और आज मेरी संगिनी जिनका नाम ही मुस्कान की परिभाषा है, खुशी राज, हम दोनों मिलकर इस पावन अवसर के सेतु हैं। We celebrate Teachers' Day every year on the birth anniversary of Honorable Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the eminent scholar and teacher who dedicated his life to the cause of education. On this occasion of Teachers' Day, we would like to pay tribute and homage to Honorable Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. For this, I would humbly request Honorable Sister M. Rashmi AC, Principal, Patna Women's College, respected Dr. Sister Jinsi AC, Superior, Avila Convent, to come upon the stage for garlanding the portrait. Thank you, sisters. हर मंगल कार्य से पहले ईश्वर की स्तुति करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रार्थना नृत्य से, जिसके बोल हैं, हे विधाता तो जग का पालनहार। जगत काणाया नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिणे शाश्वताय जग का पालनहार तूने रचा ये सुंदर संसार। हे विधाता तू जग का पालनहार तूने रचा ये सुंदर
सुंदर संसार करते हम आज ये प्रार्थना, हमको दे दे बुद्धि प्रेरणा, तेरी आशीष पाकर हम तेरी इच्छा को पूरी करें। गुरु साक्षात् ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुझ पे करे ध्यान, जीवन के हर दान तुझसे पाए हम। शुद्ध तन से तुझ पे करे ध्यान, जीवन के हर दान तुझसे पाए हम। करते हम आज ये प्रार्थना, हम में भर दे शक्ति चेतना, तेरी कृपा पाकर हम प्रेम भावना बनाए रखें। शत्रु बुद्धि विनाशा, ज्योतिर्नमस्ते। शत्रु बुद्धि विनाशा, ज्योतिर्नमस्ते। हे विधाता तू जग का पालनहार, तूने रचा ये सुंदर संसार। हे विधाता तू जग का पालनहार, तूने रचा ये सुंदर संसार। करते हम आज ये प्रार्थना, हमको दे दे बुद्धि प्रेरणा, तेरी आशीष पाकर हम तेरी इच्छा को पूरी करें। हे विधाता तू जग का पालनहार, तूने रचा ये सुंदर संसार। What a pleasant flow of graceful expressions. Truly, dance today has become the very language of gratitude. Thank you, dear friends. A symphony of adoration now transpire, a song dedicated to the unforgettable traits of our mentors by student sisters. सिखाते हैं। ओ गुरु बिना है ज्ञान कहाँ, लोग यही बतलाते हैं। सींचा वो खुद माली ने, ओ फूल कहाँ मुरझाते हैं, फूल कहाँ मुरझाते हैं। दे जीवन को आकार गुरु, कर सपनों को साकार गुरु। धूल गुरु के चरणों की सुरभित चंदन है। हाथ जोड़ सब गुरुजनों को दिल से वंदन है। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर। ज्ञान की खान है गुरुवर, तुम्हें प्रणाम है गुरुवर। सच झूठ की पहचान दे तूने हर एक सबक से, जीवन को आधार मिला तेरे दिए हुए ज्ञान से, तेरे दिए हुए ज्ञान से। ओ झुकते
जीवन को आधार गुरु कर सपनों को साकार गुरु धूल गुरु के चरणों की सुरभित चंदन है हाथ जोड़ सब गुरुजनों को दिल से वंदन है मेरा संसार है गुरुवर मेरा अभिमान है गुरुवर ज्ञान की खान है गुरुवर तुम्हें प्रणाम है गुरुवर मेरा संसार है गुरुवर मेरा अभिमान है गुरुवर ज्ञान की खान है गुरुवर तुम्हें प्रणाम है गुरुवर तुम्हें प्रणाम है गुरुवर तुम्हें प्रणाम है गुरुवर। वाह, क्या सुरमई भेंट रही ये प्रस्तुति। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। अरे भाई, बचपन में हमने डब्बे में डब्बा खेला था, याद है? Of course, and today we have upgraded it. Match the bottles. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मजेदार गेम ट्विन द बॉटल्स। अब हम सौम्या वर्तिका संयुक्त महासचिव और रिया नागवंशी खेल सचिव छात्र परिषद 2025-26 को खेल का संचालन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। Good morning, everyone. Once again, wishing our dear teachers a very happy Teachers' Day. Now, it's time to give our teachers a little test. But don't worry, no syllabus, no chalk, and definitely no exam papers. Today's challenge is all about luck, laughter, and bottles. Yes, you guessed it right. Welcome to the most awaited game of the day, the Twin the Bottle Challenge. Sounds easy. Well, let's see how lucky our teachers really are. And now, let's invite 5 teachers who are ready to put their luck to the test. We'll randomly be picking out chits, and the teacher with the same code number is requested to come on the stage. We request our dear teachers to kindly check their badges for the code numbers. Our first code is 246. 246. Please check your badges for your codes. The codes are written on the opposite side of the badges. I repeat, the first code is 246. The next code is 3. Code number 3. Our next code is 227. 227. Our next code is 74. I repeat, 74. Code number 101. Code 101. Code number 17. Code number 17. Our next code is 17, ma'am. 17, 17. Our next code is 109, 109. Our next code is 2. Code number 2. Our next code is 93. 93, 93. "23. Our next code is 23.
Here's how this game works. Inside this box, we have placed 5 bottles. Open the boxes. Teachers are not allowed to see the boxes. Audience, Audience, please. you're not allowed to tell anything. It's a secret. Inside this box, we have placed 5 bottles. Each of our teachers has those same 5 bottles in their hands. They have 30 seconds to guess where their bottles are hiding inside the box and try to match them correctly. But here's the twist. No peeking, only luck and guesswork. Teachers, please take your places, hold your bottles, and let's get started. Teachers, are you ready? Audience, are you ready? Let's count down together. The game begins in 3, 2, 1. Music, please. All right, bottles down, please. Now the time is up. Now let's check the results one by one. And the winner for the game is code number 23. Kumari Priya ma'am. Yeah. Ma'am, there is only one correct. There is only one bottle that is matching for you. And the others have no bottles matching. Yeah. I now request our Honorable Principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, to felicitate the winner. Let's hear it one last time for all our amazing teachers who played this game with so much enthusiasm. Today, we saw matches, mismatches, and lots of laughter. The lesson, whether it's exam, life, or bottles, teachers always give it their best shot. Thank you, dear teachers, and once again, a very happy Teachers' Day. Thank you, council members, for conducting this game. Thank you, teachers, for your enthusiastic participation. A cinematic flow of melody now awaits. Let the choir fill the air with rhythm and admiration, painting this gathering with hues of harmony and joy. तुम सा
कभी जुदा होना नहीं, देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं, अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। Happy Teachers Day! वाह, इस गीत ने तो जैसे पूरे माहौल में सुरों की मिठास घोल दी। लगा मानो उत्सव में रंग और दिलों में तरंग भर दी हो। धन्यवाद कोयर ग्रुप। कविता केवल शब्द नहीं, यह हृदय की वाणी है। यह गुरु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और कहानी है। अब काव्य की इस मधुर प्रस्तुति के लिए हम प्रतिभा को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। सुप्रभात। नादान थे हम, सही और गलत की फर्क से अनजान थे हम। उस फर्क को समझना सिखा दिया, जीवन के हर मोड़ पर हमें चलना सिखा दिया। बिन गुरु कोई कहाँ ही लक्ष्य साध पाया है। आखिर अर्जुन को भी तो श्री कृष्ण ने ही सफल बनाया है। टूटे हुए आस की उम्मीद हो तुम, शिक्षा के संरचना की पहली नींव हो तुम बिन इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। वेदों में पुराणों में बिन गुरु संसार का उल्लेख नहीं है। संगमरमर की खोज किसे है, तुम तो रेत से ताज बनाने की कारीगरी जानते हो। कृत्य को कृतार्थ बना दो, इतना हुनर कहाँ से लाते हो। अपनी काबिलियत से हमारा भविष्य संवारते हो, यूं ही नहीं तुम शिक्षक कहलाते हो। उंगली थामे चलना तो माँ बाप ने सिखाया, पर सही दिशा से रूबरू तुमने कराया। गलतियों पर टोका हमको, समय समय पर डांटा है। तुमने सबसे पहले बताया कि फरवरी में सिर्फ 28 दिन क्यों आता है। तुमसे ही जाना हमने कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर 8 मिनट में आती है, और सूर्य पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। बारिश में डूबी कश्ती मेरी तुम ही पार लगाते हो, और खिलती है जो धूप तब तुम इंद्रधनुष बन जाते हो। हर हीरे को तराश दो, ऐसी कला के धनी कहे जाते हो। पर हर शिष्य तुम्हारा हीरा है, यह आत्मविश्वास तुम ही तो दिलाते हो। गुरु ही नहीं गुरूर हो तुम हमारा, तुम हो तुम्हारे होने से वजूद है हमारा। यूँ कह कर यूँ लिख कर, यूँ कह कर यूँ लिख कर, तुम्हारा कर्ज ना उतार पाएंगे। एक सारथी हो बस तुम जैसा, तो हम भी पार्थ बन जाएंगे, तो हम भी पार्थ बन जाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Pratibha, for this poem encapsulating the words of gratitude and appreciation. अब हम
मारुख फिरदौस प्रधान और शैलजा गौतम पर्यावरण और अनुशासन सचिव छात्र परिषद 2025-26 को दूसरे खेल का संचालन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। Good morning, teachers. You know, Teachers' Day is one occasion where we get to put our teachers in the hot seat. Exactly. And don't worry, teachers, no exam today. Only some fun questions. All right, let's begin with something interesting. Among all our teachers, who has the highest 4 digits in their mobile number? Our volunteers are there in the audience to collect the last 4 digits of your mobile number. Like mine is 9999. So I will be the winner of that game. So any teacher who has their last 4 digit of the phone number in 9500. Check your phones quickly, check your numbers. Check your own mobile number, last 4 digits. It should be above 9,500. Come on, teachers, check it. We have one there, volunteer. Ma'am, please tell the last 4 digits. Any other teacher? Last 4 digits, 9,500 above. Volunteers, please write the code number of the teachers also, so we can call them as winners. How much? 9865. Okay, come. So we have one high 9865. Anyone with higher number? 9895 is also there. So we have a 9895. Above 9895, anybody is there? There, ma'am. No, ma'am. Above 9895. 9895 से ज़्यादा किसी का लास्ट 4 डिजिट है? मैम 993. 993. कोड नंबर? So now we have a 9934. Yes. 9934 we have. Above 9934. So now we'll count down till 5. If we don't come up with a bigger number, she is a winner. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5. We have a A winner. winner. Ma'am, please come on the stage. My name is Asha Pandey, 9934. Department Fashion Designing. Ma'am, please stay here on the stage. So the lucky winner of this round is From Fashion Designing, Asha ma'am. with 9934. Congratulations, ma'am. You truly have the highest number today. And for our next round, this one is for the most dedicated teacher. Can anyone guess? We are talking about the teacher who has taken the least number of leaves since April. And sorry, new teachers are excluded from this one. Otherwise, it will be too easy. Let's see who wins this round of commitment and consistency. Teacher who has not taken any leave or least number of leaves from April till 31st of August. The award for the consistency. Any teacher? Ma'am, how many days you have taken leave? Or 3 days? 0. Wait. We have a winner. We know who is that person, so we'll announce. We already have the record. So, the award for the consistency goes to Ms. Poonam Abraham Lakra from Artificial Intelligence and Machine Learning. Ma'am has taken just 1 day leave. From April till August 31st, ma'am has taken only 1 day leave. Ma'am, I kindly request you to come to the stage. Congratulations, ma'am. Now the last one for this evening. Which teacher entered first in this magnificent Veronica Auditorium? Don't worry, we kept a track of one who came first, and we appreciate the efforts of cultural coordinators and technical team, but they are excluded from this game. So,
our most punctual winner. I think there is some confusion regarding this. I don't know whether Poonam, you had taken more than one. That when you. Okay, Poonam has taken only one, and Amrita madam also has taken only one from April to this. One more is there, Amrita Chaudhary. Then we have 2 winners for this game. Ma'am, please come on the stage. And can we have one more award ready? So, our most punctual winner. Any guesses? Any guesses who came first in the auditorium? Students or teachers, any guesses? Excluding the cultural coordinators and technical team. We have the winner, we have kept the track. We kept track of everyone who were entering in the Veronica Auditorium. So, our winner is Dr. Seher Rahman, Head, Department of English. Now, I would like to request all the winners to proceed to the well. Now, I would like to request respected Vice Principal, Dr. Sister M. Tanisha AC, to award our winners. Students there and teachers also. There might be many more teachers who have not taken any leave. Sumit is saying that he... No, but... Yourself have not taken any leave. That mine, no, don't count me. Sufia madam has not taken any leave actually. She's 0. So give her a big applause. So we will find out some more people. So just now, whoever we know, we will give. And we'll continue to give them. Because we don't know, we had to verify it from the office. But I think they missed out something. They went to verify that, I know. They were telling me that they're verifying. But something must have missed here and there. But there are some teachers, you yourself know that your teachers don't take leave. Students will be the first one to witness to that. Okay. So those of you who are here now, they will get. The rest we will give it later. Students, please clap for the winners. Thank you, sister, and thank you, teachers, for your delightful participation. Have a wonderful day ahead. Gratitude to our council members for steering this game, and heartfelt thanks to our teachers for their participation. नृत्य वह कला है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं। आज छात्र परिषद अपनी भावनाएं कदमों की थाप से व्यक्त करेंगे, जिसका विषय है हुक्स ऑफ द डेकेड। इसके लिए मैं सभी छात्र परिषद 2025-26 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। आंख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। निशाने हूँ मैं मारती, खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा।
टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा मुंडियां नूं सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा सुरमा बटोरे लगदे छिछोरे बाए हाय फाए दिल पे तराती साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए काने कटोरे सुरमा बटोरे लगदे छिछोरे बाए हाय फाए दिल पे तराती साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए चाय में डूबा वे सिकुट हो गया मैं तो एवी 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 लुट गया ओ मैं तो एवी 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 लुट गया मैं तो एवी 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 लुट गया ओ मैं तो एवी 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 लुट गया तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ ओ ओ इश्क तेरा अद्भुत। इस नृत्य ने तो जैसे ताल और लय को प्राण वायु दे दी। सचमुच हमारे काउंसिल ने सिद्ध कर दिया कि नृत्य केवल कला नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। इस शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। Now, here starts the thematic rise, celebrating timeless mentorship with the title The Fun They Had. शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाते, वो जीवन की दिशा करते हैं। गुरुकुल की शांत छांव से लेकर आज के डिजिटल संसार तक ज्ञान की यह यात्रा अद्भुत रही है। This robot gave me 10 more sums. It surely hates me. Correction. I hate all students equally. Complete your classwork. It's just a piece of cake. Correction time. Show me your classwork. I ate it. Why did you eat it? Because you said it's just a piece of cake. Look, I found a book. Book like Google without Wi-Fi. It says that they used to go to Gurukul. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. यदि वास्तव में तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दो। तुमने वह दिया है जो कोई शिष्य नहीं दे सकता। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा।
let's begin the transition. झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। Students, introduce yourself in English. My name is Cloud King. How what? Meghraj madam, Meghraj. My father's name is Snake King. What? Nagraj madam, Nagraj. किसकी सुनो उसकी सुनो किसकी सुनो क्या क्या क्या, मांझ तेरा सबकी मेरी तेरी कटी हा हा हा, खोटा जरा सबका मेरा फिर भी चला पा पा पा, चित भी मेरी पट भी मेरी धक तेरी की चा चा चा। मैडम जी गो इजी सब वाईफाई हम 3G, मैडम जी गो इजी सब वाईफाई हम 3G। लगती है कच्ची माथा बच्ची, पर इस बारी अपनी है बारी, हम तेजा है मात इधर है। मैडम जी गो इजी सब वाईफाई हम 3G। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं PWC न्यूज। कोविड के कारण हुए देश भर के सारे शिक्षण स्थान बंद। वेट प्रॉब्लम है, अंदर सॉल्यूशन है। गुड मॉर्निंग क्लास। जुगनी, तुम बताओ कम्युनिकेशन क्या है? मैम कम्युनिकेशन is Switch on your camera everyone. मैम ग्लिच हो रहा है। मैम नेटवर्क इश्यू। मैम ग्लिच हो रहा है। मैम आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। आजा डायरी में छुपा दूं, आजा तुझको चोटी में बांधूं, कहीं किसी को न दिख जाए, हाथ तेरा कस के पकड़ लूं, साथ साथ तेरे मैं चल दूं, डर तुझे ना किसी से लग जाए। रातों को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 ला।
glitch, too much fun, error. Shut up. Literally, the fun they had. ¡Ay, caramba! फ्री बैठ के हमको मक्खी नहीं मारना, हर दाव जीतेंगे हम, आका हमको नहीं हारना। हम हुकुम के इक्के हैं जुबां के पक्के, हम हुकुम के इक्के जुबां के पक्के, खाके था पेड़े जो एड़े से टेढ़े बने हैं, तो हम क्या करें? जोर लगा के जान लड़ा के बोलना। सबके होठों पे चर्चे हैं हमारे, ला 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 ले। देखो ज़मीं पे उतरे हैं सितारे, सितारे। सबके होठों पे चर्चे हैं हमारे, ला 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 ले। देखो ज़मीं पे उतरे हैं सितारे। गुरुकुल से गूगल तक का ये सफर हमें सिखाता है कि साधन चाहे जैसे बदल जाए, शिक्षा का मूल सार वही रहता है। गुरु ही वह दीप हैं जिनकी रोशनी से हमारा अतीत गौरवशाली, वर्तमान मार्गदर्शक और भविष्य उज्जवल बनता है। यही है कृतज्ञता की अमर यात्रा। Thank you everyone for your charismatic performance. As the celebration draws to a close, we invite our Honorable Principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, for the group photography and to bless us with her words of wisdom. Anyway, I know today you are not in a mood to listen to me. Every time principal goes up and gives some advice. But today I am standing here on behalf of all the teachers, so I should be saying something to you. I just can't leave the stage without saying at least something. So at the very outset, I wish all the teachers and staff a very happy Teachers' Day. It's really, dear students, it is really overwhelming to receive such love and respect that you have expressed just now on this stage. Thank you, dear students, for your appreciation that you have done through various programs. I was just going through all the programs, the items that you presented. So the first one, the beautiful lyrics of the first opening dance. So your choice of song was the perfect one for today's occasion, and you did very well. Then the song sung by the student sisters. It was beautiful, soft. They gave importance of a guru, the respect that you need to give to a guru. So that was done. Everything done very perfectly, students. This is what we want from you actually. Then game one. In life, you always have matches and mismatches. So we enjoyed the game, and it was good enough, and we also learned a lesson that everything doesn't match always. Okay, then we had the melody of appreciation by the college choir. It was very rhythmic and meaningful, very meaningful. I think you had some melody medley. I gave 2-3 songs together, put them together, and it was sounding really good and sweet. Then we went through the echoes of gratitude, the poetry. That was really, that student, from your heart. It was from your heart. So thank you. And then we had the second game. That was very easy. So we must always look for the highest to fly as high as possible. We are all, I said I am starting with 7,000 only.
There are somebody starting with 8,000, somebody with 9,000, and that also the higher portion of the 9,000. So always think your aim must be very high. Let us take that way, look at that way. Anyway, it was fun. Then we have the council dance, My Smart Girls, with some smart moves on the stage. Thank you, my dear student council members. We really enjoyed. You took us back to the era from Gurukul to now the Google chair. I was feeling sorry for that robot who was on the stage. She came with all wrapped up her hand. I was telling Tanisha she must be feeling very hot because it was all wrapped up with silver foil. Anyway, thank you so much for all the trouble that you all have taken. Then it was actually your choreography. It was a mixture of all the journeys that we undertook together, you students and we teachers. So it was a story enacted through that choreography, and thanks to all of you for everything. So we teachers would like to give you a big hand. Enough, loud enough, so you can join us also. Thank you. So really, what actually makes us happy, teachers, more than the decorations or your performances, what matters most to us teachers is the spirit of gratitude and respect you express. That is what makes this day special for every teacher. Then do you know what makes a teacher happiest? Do you know, students? They are not very sure. Then I'll tell you what makes a teacher happy. It's not the applause, the claps, the wows that you gave, the hooting when the teachers entered, or the flowers, or the greetings, but the sight, that to see, the sight of our students growing into responsible, honest, and compassionate and confident individuals. We want to see you that way. When we see you work hard, uphold the values that is given to you, when you work hard towards achieving your dreams and use your talents for the good of the society, we feel that our mission is fulfilled. That is the greatest gift you can give to your teachers. As your principal, I also wish to offer you a word of advice, especially as young people in today's digital world. You are already guessing what sister is going to say. Social media is a powerful tool, definitely. On the positive side, it connects you with knowledge, opportunities, and communities across the globe. It allows you to express your creativity and voice. But it also has its dangers. It can become addictive, spread negativity, or pull you away from the real human connections. Too much of it can drain your energy and distract you from your goals. So what I would like to tell you is use social media wisely. Because we can't help it, we have to use it. So let us use it wisely. Let it be your servant, not your master. They should not dictate to you, but you dictate. What you want, you do. What you want, you must see. What you want, you take it from there. Choose what uplifts, educates, and inspires you, and avoid all that drags you down.
balance the virtual world with real life friendships, reading, reflection, and face to face conversations, because those are the things that make you truly human. So, on this Teachers' Day, I thank you once again for all the love and appreciation that you have shown us today. May you continue to grow as students who not only make your teachers proud, but also bring light and hope to the whole world. A special word of thanks to the energetic and enthusiastic Student Council for organizing this program. They have been planning it, I don't know, I think from the time they took charge of the Student Council, at least from the college reopened definitely. Of course, monitored by the cultural coordinators, and also to all the CRs and VCRs of each department, and each of the participants and volunteers who have been round the clock preparing for this day. We are truly blessed to have such loving students in our college. Thank you, everyone, and God bless you all. Thank you. Now to express our gratitude, you are waiting, I know. अभी कुछ होने वाला है. कुछ टीचर साहब इधर से उठ करके चले गया है. आप लोग देखते रहे ना, तो अभी तो कुछ होने वाला ही है. अब देखते रहिए, because how smart your teachers are. Now we begin, we want to sing a song in gratitude for all that you are to us. You are our very own, because you are there, we are here. So we express our gratitude to you for all that you have been, for all your expressions of love, gratitude, and respect, especially that you have performed on the stage today. So thank you once again. So here we present to you our smart teachers with a song for you. Thank you, sister, for your valuable words. मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। हो मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें
छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाए तेरे लिए इन राहों में, हूँ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। खाना पीना साथ है, पढ़ना लिखना साथ है। खाना पीना साथ है, पढ़ना लिखना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सदियों से गूंजा है इसका जय घोष। भारत है अमर अविनाशी अदम्य विशेष। गंगा का पवित्र जल, हिमालय की ऊंचाई, रेगिस्तान की तपिश, समंदर की गहराई, कश्मीर का गुलाब, केरल की हरियाली। भारत है रंगों की जीवित चित्रकारी। एक ही सूरज, एक ही धरा, फिर भी रंग हजारों यहां खिला। विविधता में एकता का यही है राज। भारत है एक रंग मंच, हर रंग यहां सरताज। प्रेजेंटिंग शेड्स ऑफ इंडिया।
सागर
हर आयोजन के पीछे अनेक प्रयास छिपे होते हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेघा कुमारी, संयुक्त पर्यावरण और अनुशासन सचिव, छात्र परिषद 2025-26 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। One book, one pen, one child and one teacher can change the world. With these words filled with a message for life by Malala Yousafzai, I, Megha Kumari, Joint Environment and Discipline Secretary, Student Council 2025-26, Patna Women's College, wish you all a very pleasant afternoon. As I stand before you to present the vote of thanks. First of all, I thank the Almighty for bestowing us with His blessings and for giving us the privilege of being in guidance of these teachers. I express my heartfelt gratitude to our Honorable Principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, for her continuous encouragement and instilling the spirit of empowerment in us. Your guidance helped us in every sphere and in every work we did. I express my sincere thanks to our respected Vice Principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, for her constant support. I thank Dr. Sister M. Jinsi AC, Superior Avila Convent, for her helpful assistance. Our heartfelt gratitude to the respected deans, heads, faculty members, teaching and non-teaching staffs. Special thanks to Dr. Sister Anna AC, Mr. Ajay Jha, Ms. Amrita Prakash for the technical support. Without your help, this program couldn't have achieved accomplishment. Deepest regards to our cultural coordinators, Dr. Celine Crasta AC, Ms. Inakshi De Biswas, Ms. Pooja Kumari, and Ms. Kriti Rani, for whom we are so grateful to be under the guidance that layered the essence of beauty and meaning in our performance. Thank you, Dr. Sister Nelsa AC, for guiding the singers. Truly, we all students got emotional and our heart is filled with so much love and gratitude. What an awestruck and beautiful performance it was by your side. My sincere regards to the media personnel for capturing today's event. I thank all Didi and Bhaiya for their constant support and consideration. I appreciate the endeavor of each participant for the grace and enthusiasm they showcased. I thank Sneha Mehta, Rinshika and team for the art and craft work. Now, I appreciate my fellow student council members for planning and coordination of the entire program through teamwork. Once again, thank you teachers, the architects of our future. You are our inspiration for activating the magnets of curiosity, art, wisdom, and knowledge. Your influence never stops. Thank you so much. Happy Teachers' Day.